So this is why we focus on two aspects of the experience this time around with Realme 9i. They are ultra-fast performance and ultra charging. Let's start with ultra-fast performance. A lot of smartphones slows down over time, but Realme number I series is often an exception to this rule. This is because Realme is committed in giving the best possible performance in its class. We believe great performance is the key to achieving great experience. If you look at most smartphones in a similar price segment, you will see that most of them are running on a 12nm processor. These processors run fine at the start, but as soon as you start throwing resource-demanding apps at it, the overall performance and battery life starts to get hit. This is why Realme 9i is powered by the Qualcomm Snapdragon 680 processor. If you are familiar with the processor, you will know that this is not just any other processor. Snapdragon 680 features a state-of-the-art 6nm process technology that was only used on flagship devices previously. In fact, Realme 9i is the first smartphone in its class to be running on a 6nm processor. Having a smaller process node means higher transistor density. When compared to a 12nm process technology, the 6nm process technology allows 211% higher transistor density. So, what does it bring when transistor density is higher? Well, that means we are able to pack more transistors in the processor. Snapdragon 680 packs up to 140 million transistors per square millimeter. More transistors means more computational power, brings better performance. Because Snapdragon 680 processor is being able to pack more transistors into a smaller space, we can expect improved performance all around. Compared to the previous generation, Snapdragon 680 saw a 20% increase CPU performance, 17% increase GPU performance, and 10% increase AI performance. Let's see how Snapdragon 680 processor stacks against a typical 12nm processor in its class. The 6nm process reduces power consumption by 62% while improving performance by a massive 46% compared to the 12nm process. This brings the Realme 9i performance and gaming experience to new heights. Thanks to the higher computation efficiency on a 6nm processor, apps on the Realme 9i launch faster. That means you can open multiple apps much quicker than ever before. Because 6nm process technology features less current loss, Realme 9i is able to stay cooler for longer even when running on resource-intensive apps when compared to smartphones running on 12nm processor. This leads to more stable frame rate, which leads to smoother, more immersive gaming experience. All in all, Snapdragon 680 6nm processing technology powers Realme 9 with unparalleled speed and performance for next-level gaming experience while keeping the overall power consumption low and overall performance stellar. The Realme 9i also comes with 6GB of RAM right out of the box. Thanks to the dynamic RAM expansion technology, Realme 9i is able to expand its RAM to 11GB dynamic RAM by converting its internal storage to virtual RAM. More RAM means faster ROM speed. Here we can see when compared to DRE off, Realme 9i is able to launch multiple apps at once much faster. In terms of internal storage, Realme 9i comes packed with up to 128GB of storage for you to store all of your favorite films and games. Just in case you run out of internal storage, don't worry, we've got you covered. Realme 9i comes with storage expansion capability to up to 1TB. For all the music and movie lovers out there, you'll be pleased to know that Realme 9i comes with a stereo dual speakers for cinematic listening experience. Now, let's talk about charging. If you are a long-time Realme fans, you know that we spare no expense in giving you the fastest possible charging technology. Most smartphones in similar price segment only gives you an 18W quick charge technology. Those are great and pretty fast as well. But we think we can do better with Realme 9i. I'm thrilled to share that Realme 9i is the first smartphone in its class to have 33W dark charge. The charging speed sees a massive 36% increase compared to Realme 8i. In terms of battery capacity, Realme 9i is packed with a 5000 mAh battery for all-day battery life on a single charge. Now, let's talk about camera. With the rise of TikTok and Instagram, everyone loves shooting photos and videos on smartphones. This is why Realme 9i features a brand new 50MP primary camera along with a 4cm macro camera,
along with a black and white sensor for better, sharper portrait photos. Thanks to the 50 megapixel high-res camera, we can now capture every detail in a single snap with Realme 9i. You can also be sure that portrait shots come out from Realme 9i has realistic colors with sharp details. And finally, you can capture even the smallest things in life with Realme 9i's micro camera. The Realme 9i also features a 16 megapixel AI beauty selfie. Thanks to the built-in AI algorithm, you can get an Instagrammable selfie with just a single tap. Just like any of our devices, Realme 9i has undergone rigorous quality testing to ensure reliability and durability. So you can be sure your Realme 9i will work perfectly well down the road just as the day you bought it. So, this is the all-new Realme 9i. From class-leading Snapdragon 680 processor for next-level performance to 50 megapixel high-res camera for next-level photography, Realme 9 has been redesigned from the ground up to give you next-level experience all around. I'm sure you will love Realme 9i as much as we do. This is Bilal from VideoWaliSarkar और भाई आज की जो वीडियो है ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो इस चैनल के ऊपर मैंने नहीं किया. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे साथ ओसामा मौजूद हैं. ही इज द हेड ऑफ मार्केटिंग एंड पीआर फॉर रियलमी पाकिस्तान. तो ये वो बंदा है जो मार्केटिंग को हेड कर रहा है रियलमी के केस में. एंड दिस गाय honestly knows everything जो कि आप लोग जानना चाहते हैं ना. तो जब भी मेरे पास कोई बंदा ऐसा आता है ना जिसके पास ज्यादा but still less than him, I think he knows everything about everything. But yeah, वो कह रहे हैं. बहरहाल होता ये है कि मेरी कोशिश यही रहती है कि इस तरह की वीडियोस में ना कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जाए कि कुछ तो लीक सामने आया, कोई तो बात सामने आया. तो ओसामा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम. Thank you so much for having me. How is everything going for Realme Pakistan right everything now? is quite exciting. We are packed with phone launches, one after the other. Something will be coming in the market, so something good for the consumers and your followers as well. Okay. You can expect something from Realme every month. Okay, so from now onward हम हर महीने कुछ ना back to back कुछ ना कुछ जरूर आ रहा है. सही. अच्छा ओसामा, मेरा पहला क्वेश्चन जब भी कोई ब्रांड की तरफ से आके बैठता है तो मेरा सवाल यही होता है कि what is Realme representing? Like एक परसेप्शन वो है जो मेरा होगा या मेरे व्यूअर्स का होगा, but I would want to know कि as Realme what is your perception about your brand? Like आप लोग क्या pursue करते हैं? So in one statement, I think Realme is a brand for youngsters. So Realme is something that is a brand for Gen Z, you know, it's something for youngsters. All our communications, design, language, everything, the people that we work with, the campaigns that we take out, वो तमाम के तमाम जो है वो youngsters के ऊपर direction होते हैं और centric होते हैं. Mainly Realme is a brand for fashionable people because we look towards the Gen Z because they're edgy, they stand out, and the same way Realme is also a hip brand, it's edgy and it stands out as well. But what this Gen Z really cares about is the technology that they're getting and the affordability. These things go hand in hand for Realme as well. Tech Leap is something that we really look forward to bringing because we bring the premium and the most flagship features in our phones. But yet, whenever people hear about premium and flagship features, they think that the price might be higher. But we bring them on an affordable rate, affordable price. I think our prices are the best in the segment that we launch our phones in. Okay, so when you say that, you know, you guys are always focusing on the high-end features, so like अगर मैं बात करूँ कि if I want to see a Realme phone, what is the first priority? Like काफ़ी brands हैं जो कहते हैं कि हमारी build बहुत अच्छी होगी. There are brands that say we are a camera-centric company, and then there are brands that say हमारी gaming बहुत अच्छी होगी. तो if I ask you कि Realme की DNA में क्या चीज़ ऐसी है, तो what is that part? So I think, to say the least, Realme has something for everyone. But when you talk about exactly what is our KSP, so I would always say that our KSP-A is the fashion-centric, the design that we come up with. It's something that's cutting edge. It's something that Gen Z would love. You might have seen that our Realme 8 series had that Dare to Leap caption right next to the back. So that was something that had never been done before. Also, like I'm cutting you off here. Cutting edge की बात हो रही है तो एक चीज़ जो मैंने Realme में बहुत ज़्यादा देखी है वो ये है कि there was a time, आज से 2 साल पहले अगर हम चले जाते हैं तो every single brand was targeting businessmen. For some weird reason हम जो भी ad देखते थे, हम जो भी चीज़ देखते थे उसमें businessmen जो थे उनको target किया जाता था.
But and that's exactly what we've broken away from. Yeah, exactly. Realme has completely changed the game through this because we've broken away from the clutter. So when you say that all the brands are targeting premium segment customers and business-minded customers, that's where the clutter starts generating. And we broke away from that clutter. We went towards the Gen Z because that was what our vibe was. And then we started focusing on the things that Gen Z really likes to have in their smartphones. So fashion-centric was one. Then the camera-centric prowess that we have. You might have seen that the number series have been at the forefront of photography. GT Master Edition was something that was also breaking away from the mound of whatever was available in the industry. And with the Realme 9 series, you'll also see that camera is something that we've really blown away. So you just mentioned Realme 9 series, huh? Yes, yes, and that's why I'm here for. Okay, yeah. So basically आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि Realme के लिए उनकी जो नंबर सीरीज है ना, this is it. Like जब भी नंबर सीरीज की बात आती है ना, तो Realme aggressive होके खेल रहा होता है. And I'm very excited, and I'm gonna ask you this question. कि usually we always see 2 launches in a year. हमेशा होता है कि Realme नंबर सीरीज एक साल के स्टार्ट में आती है, एक साल के एंड में आती है. Last year we didn't saw that coming. Yeah. Like जो अगली नंबर सीरीज थी वो हम नहीं आई. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा क्वेश्चन ये होगा नेचुरली कि व्हाई डिड दैट हैपन, एंड अगला उससे ही क्वेश्चन जो इंटरलिंक्ड है वो ये है कि आगे क्या आ रहा है. Yeah, so Realme number series has always been the front runner for the beginning of the year. And then last year, we also brought in our premium segment phones, which were the Realme GT Master Edition. So we created these 2 parallels of, great technology, yet at affordable prices, that we had the number series coming in and we also had the GT series coming in. And for others who wanted to have an affordable aspect into it, we had the C series and we also have the Narzo series. That was also the affordable, but the gaming segment of phones. So again, this year as well, we would always have our number series, but the number series is going to be all spread across the first half of the year. And in the second half, there's, much more things coming in. But number series is not the only thing that ends over here. We also have the GT series coming in the first half of the year. So you would be it's a very exciting first half. I remember last time I did an interview with Sherry, तो उसने मुझे बताया था कि GT series के लिए हमारे बड़े exciting plans हैं, and GT ME वाला सारा scene and all that. जी. तो I'm excited to see कि कुछ नया चल रहा है. But when we talk about Realme 9 series, तो क्या focus है Realme 9 series का? Like what is going to be the main thing? So Realme 9 series basically builds up on the fame and the popularity of the Realme number series. Okay. So as you have been part of the Realme journey, you would know that the Realme number series has, we call it like the democratizer of technology. Democratizer of technology basically means that it brings in a technology leap, a tech leap, or a break away from the clutter, and we bring it on very affordable prices. So you might have seen that the Realme 3 series had the 20-watt fast charging coming in. Then the Realme 5 series was one where we brought in the quad camera. Then the Realme 6 series saw the 90 Hz refresh rate. And with the Realme 7 series, we had the Sony 64-megapixel camera coming in. With the Realme 8 series last year, we had the 108 MP camera coming in for the first time in this price segment. So with the Realme 9 series, it kind of builds upon that fame and the popularity of bringing that popular or democratizing of the technology for our consumers. And this year, Realme 9 series is all about camera again and the gaming. Camera, as you can see, that we've got the Sony IMX766 OIS sensor that is the best in this class. More so on that once the product launches, but definitely people would love, like photography lovers would love it because it captures in more light. It's more stable because of the OIS. So even if you've got moving shots or anything, it would really take the game of photography up a notch in the entire industry. Okay, next one is going to be a difficult question. मुझे नहीं पता आप आंसर करोगे या नहीं. But I want to know कि how many devices are we expecting in the number series this year around? So the number series, like I said, is quite packed. Every month there's something coming in. So we've got the Realme 9i coming in right around this corner. And then we've got the Realme 9 Pro Plus. And right after that, we'll also have the 9 4G. So it's quite a packed first half of the year. And I think this is the first time कि number series का जो Pro Plus variant है वो launch हो रहा है. Yes, yes. This is going to be the most premium segment that we are launching it in. Okay, so Osama, I know कि अभी Realme 9i जो है वो launch होने वाला है. And by the way, एक यहाँ पर मैं चीज़ include भी करना चाहूँगा कि we also got a very crazy type of access Realme 9i के assembly वाले सारे scene में. और Realme 9i अब अनबॉक्सिंग तो हम सब ने करनी है, मैंने भी करनी है, लगानी है. लेकिन अभी इसी वीडियो के अंदर आपको आगे चलकर हम दिखाएंगे कि Realme 9i जिसकी अनबॉक्सिंग हम करते हैं, अनबॉक्सिंग से पहले क्या होता है. बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि Realme इज़ नाउ मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान. तो ये एक बहुत बड़ी बात है ओसामा. फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन टू यू गाइस, क्योंकि
हैव सीन द प्लेस, मैं रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ इस पॉइंट के ऊपर, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत क्रेजी था। मैं अब जो सवाल पूछना चाहूँगा बिफोर गोइंग टू दैट असेंबली वाला सिचुएशन, प्राइस क्या है भाई Realme 9i की? So good thing that you mentioned about the assembly line. Are we sharing the price? We are sharing the price, Okay. yes, because this is the first time that we are sharing the price on any channel. So Okay. this is where the consumers will get to know what the Okay. price will be. But before that, I will just mention that yes, the assembly line is something that's quite exciting, and that was exactly what we had in mind, because your consumers and the audience that you work for, they love looking at your unboxing, and everybody's doing the unboxing, but we wanted to break away. We wanted to show you something that no one else has shown you before, in Pakistan at least. So that is why we wanted to take you a step before what happens when the phone gets into the box. So आपने exactly उसके अंदर देखा है कि यार डब्बे के अंदर से जो चीज़ निकलती है उसके अंदर क्या होता है. So you've actually seen the real packing, the real मैं अभी यहाँ पे unboxing. डिस्कस इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि इसके बिल्कुल बाद असेंबली का जो पार्ट है वो आना है, बट बिलीव मी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो पाकिस्तान में हो रही होंगी, लाइक क्योंकि आई हैव वेंट टू चाइना फॉर डिफरेंट ब्रांड्स एंड स्टफ, और मैंने वो चीज़ें चाइना में देखी थी. There's no difference in quality, there's no difference in the SOPs, the procedures that we follow. एंड आई वाज शॉक्ड, लाइक मुझे लग रहा था कि इट विल बी वेरी लेबर इंटेंसिव और वो मशीनरीज को निकाला गया होगा, देयर वाज सो मच ना. तो अभी आप It's a very great and smooth assembly line that you will get to see, and I guess you also get to assemble your own phone, so that's something really exciting at the same बेसिकली time. उस असेंबली में हमने अपना फोन असेंबल किया है. सो शुरू से लेके एंड तक आई हैड वन फोन जिसके सारे पार्ट्स मैं खुद लगा रहा था, एंड मजेदार बात यह है कि वो एंड पे चल भी गया. सो देयर वाज दैट. सो ओसामा, आई थिंक अब टाइम आ गया है कि हम प्राइस रिवील कर दें, क्योंकि लाइक जब भी मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ यू आर लाइक मैं प्राइस बताऊंगा, बट देन यू आर लाइक मैं आगे चल रहा हूँ. Yes, exactly. प्लीज प्राइस बताएं Realme 9i. And the Realme 9i will be priced at 36,999. Do you want the phone? यू हैव द फोन. Yes, here they are. ये दो क्यों हैं? क्योंकि एक आपके किसी फेमस फैन को जो है वो गिव अवे होगा. सो ओसामा बेसिकली ना वांटेड के वीडियो पे लाइक ज्यादा आए, तो देख रहे हैं ये रिश्वत साथ लेके आए हैं. You love giveaways. I love Audience giveaways. loves giveaways too. So And I that's think nice. Realme has been the biggest giveaway partner for VideoWaliSarkar. हमने जो अब तक का जो biggest giveaway किया वो Realme 8 series में किया था. exactly. Yeah. Okay, so 6GB 128GB 6GB वेरिएंट इज लॉन्चिंग. सो जो प्राइस आपने मुझे बताई है, दिस वाज फॉर द 6GB. For 6GB 128, yes. इंटरेस्टिंग. एंड दो कलर्स हैं इस टाइम मेरे पास, एक प्रिज्म ब्लू है और एक प्रिज्म ब्लैक है. इन फोन्स की जो अनबॉक्सिंग वीडियो है वो आपको देखने को मिल जाएगी. मेरे ख्याल से उसामा को हमें ज़रा गुड बाय करना चाहिए, क्योंकि असेंबली प्लांट जो है ना वो बहुत क्रेजी सा टूर सा हो गया, तो वो जाके आप लोग देख लें. थैंक यू उसामा फॉर जॉइनिंग अस. बहुत मज़ा आया, एंड आई थिंक वी शुड डू दिस मोर ऑफन. मेरी तो ऑडियंस को भी अंदर की इनसाइट्स बहुत पसंद होती हैं. तो अब लेके आए ज़रा प्रो प्लस जो है ना, ज़रा बिल्कुल 9 Pro Plus भी आएगा, 9 4G भी आएगा, बट फॉर नाउ वी हैव द Realme 9i. ठीक है. सो यहाँ पर अनाउंस हो गया है Realme 9i की अनबॉक्सिंग भी. ये वीडियो पोस्ट होते ही होपफुली थोड़े टाइम में आ जाएगी, और गिव अवे भी जो है वो आ जाएगा, क्योंकि अब आई हैव 2 डिवाइसेस, तो 2 तो मुझे नहीं चाहिए ना. तो एक गिव अवे आ जाएगा, जो भी कलर आपको चाहिए होगा हमेशा की तरह. एंड जाएं असेंबली प्लांट की वीडियो देख लें. भाई अब जहाँ तक बात है असेंबली प्लांट की, तो यार असेंबली प्लांट के अंदर वीडियो दिखाने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि इस सर के ऊपर जब भी कोई टोपी पहनी जाती है ना तो बहुत बुरी लगती है. तो मैंने कहा पहले आपको एक अलर्ट दे दूं कि वहाँ पर मैं बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन आपको सबसे पहले ESD कोड्स पहनने पड़ते हैं, जिस तरह किसी भी असेंबली प्लांट में होता है, ताकि जितना भी इलेक्ट्रिक चार्ज है वो रिमूव हो जाए. और उसके बाद आप असेंबली प्लांट में जाते हैं. मैं जब असेंबली प्लांट गया तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से मुझे वेलकम किया गया वो एक बहुत बड़ी बात थी. और जिस दिन मैं असेंबली प्लांट गया हूँ वो पहला दिन था जब वहाँ पर Realme 9i की जो ऑफिशियल असेंबली है वो स्टार्ट हुई थी, और यही वजह थी कि वहाँ पर हर चीज़ Realme के जो कलर्स हैं उसमें हुई थी, और Realme 9i जो है उसके हिसाब से असेंबली प्लांट को कन्वर्ट भी किया गया था. अब बिफोर मूविंग फॉरवर्ड ये मैं आपको बात बता दूं कि असेंबली प्लांट में जितनी भी मशीनरी होती है उसको चेंज नहीं किया जाता, लेकिन उन मशीनरीज के ऊपर मौजूद जो सेट्स होते हैं जिसके ऊपर फ़ोन रखना होता है उसको हर फ़ोन के हिसाब से रिप्लेस किया जाता है. तो ये वही दिन था जिस दिन वो सारी चीज़ें रिप्लेस हुई थी. सिलिकॉन कवर्स रिप्लेस हुए थे, और असेंबली का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है असेंबली के ही स्टार्ट. तो बेसिकली जो पहला पार्ट असेंबली के प्रोसेस में यूज़ होता है उसको भी असेंबली ही कहा जाता है. ये वो पार्ट होता है जिसके अंदर आपका डिस्प्ले ऑलरेडी लगाया गया होता है, और बाकी जो कंपोनेंट्स हैं वो पीछे से असेंबल करके लगाए जाते हैं. और सबसे पहला कंपोनेंट जो आता है वो बेसिकली आपका मदरबोर्ड होता है. अब हर फ़ोन टू फ़ोन डिफरेंट होता है, लेकिन इन फ़ोन्स के अंदर बेसिकली आपको 2 बोर्ड्स देखने को मिलते हैं. एक आपका मेन बोर्ड होता है जो कि ऊपर वाली साइड पर लगाया जाता है, और एक छोटा बोर्ड होता है जो कि मोबाइल
मोबाइल फ़ोन के नीचे वाले साइड पे लगाया जाता है और इस बोर्ड के अंदर बेसिकली आपकी चार्जिंग पोर्ट, आपका स्पीकर, आपकी वाइब्रेशन मोटर जैसी चीज़ें जो होती हैं वो मौजूद होती हैं। दोनों बोर्ड्स को लगाने के लिए एक ऑटोमेटेड मशीन के थ्रू पहले सिलिकॉन की सील्स लगाई जाती हैं असेंबली के ऊपर और उन सिलिकॉन सील्स के ऊपर ये बोर्ड्स रख दिए जाते हैं और फाइनली दोनों बोर्ड्स को एक रिबन केबल के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है। इस पॉइंट पर ये बात इंक्लूड करनी भी इंपॉर्टेंट है कि जनरली इससे पहले जो असेंबली प्लांट्स मैंने देखे थे उन असेंबली प्लांट्स में ये बोर्ड्स ऑलरेडी लगे हुए आते हैं। तो ये जो बोर्ड्स हैं ये कभी भी मैंने पाकिस्तान में असेंबल होते नहीं देखे। ये पहली बार था कि ये प्रोसेस भी यहाँ पर हो रहा था क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मशीन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। छोटे छोटे काम के लिए प्रिसीजन रिक्वायर्ड होती है और यही वजह है कि हर एक पॉइंट पर एक ह्यूमन बीइंग उसको कर रहा होता है और एक ह्यूमन बीइंग मशीन के थ्रू उसको टेस्ट कर रहा होता है। मदरबोर्ड्स को लगाने के बाद जो अगला प्रोसेस होता है वो बेसिकली कैमरास का होता है और कैमरा को लगाने के लिए असेंबली प्लांट के ऊपर ही एक स्पेशल छोटा सा रूम, एक चेंबर सा बनाया गया होता है और उसके पीछे रीज़न ये होती है कि कैमरा सबसे ज़्यादा डस्ट से ख़राब होने वाला कंपोनेंट है और यही वजह है कि जब कैमरा को असेंबल किया जा रहा होता है तो कैमरा के मॉड्यूल वाले रूम में आपको बिल्कुल डस्ट देखने को नहीं मिलती और एक बाकायदा डेडिकेटेड ह्यूमिडिफायर भी लगाया गया होता है ताकि जो डस्ट है वो ह्यूमिडिटी की वजह से नीचे गिर जाए। और कैमरा मॉड्यूल्स को बेसिकली प्लग इन कर दिया जाता है और हर कैमरा मॉड्यूल के ऊपर एक प्रोटेक्टर मौजूद होता है जो कि अगले स्टेप के अंदर जब आपका मोबाइल फोन फाइनल होने वाला होगा उस टाइम पे रिमूव होगा ताकि दौरान असेंबली आपके कैमरा के मॉड्यूल के ऊपर कोई स्क्रैच ना आए। एक चीज जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि हम लोग जब किसी मोबाइल फोन में कैमरास को गिनते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि सब कैमराज एक जैसे ही होंगे, लेकिन असल बात यह है कि मेन कैमरा को आपके मोबाइल फोन में लगाने में और बाकी कैमरास को लगाने में प्रोसेस का थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि दोनों के साइजेस में और दोनों की फंक्शनैलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यही वजह है कि हर एक कैमरा एक सेपरेट स्टेप के तौर पे लगाया जा रहा होता है और आपका जो फ्रंट कैमरा है वो भी बेसिकली असेंबली के ऊपर उसी तरह लगाया जाता है और आपके जो कैमराज हैं जब वो भी असेंबली पे लग जाते हैं तो फाइनली आपके मोबाइल फोन को एक बार पावर दी जाती है। पावर देने के लिए बेसिकली एक सिस्टम बना होता है जिस पर मोबाइल फ़ोन वो रखते हैं। अभी तक मोबाइल फ़ोन को बैटरी नहीं लगाई गई होती और सिर्फ ये देखा जाता है कि कोई यूनिट कोई जगह शॉर्ट सर्किट ना कर रही हो और जैसे ही ये हो जाता है तो मोबाइल फ़ोन अगले प्रोसेस पे जाता है जहां पर मोबाइल फ़ोन में फाइनली बैटरी लगाई जाती है। अब बैटरी के ऊपर एक ग्रीन पुल टैब होता है जो कि बेसिकली ख़ास तौर पर इस असेंबली यूनिट के लिए लगाया जाता है और ये इंडिकेट करता है कि ये बैटरी ठीक है क्योंकि अगले स्टेप पे जब बैटरी चेक होती है और अगर उसमें कोई इशू आता है तो आप पुल टैब से उसको खींच के बाहर निकालते हैं और अगर ये पुल टैब खिंचा होता है तो बेसिकली उससे पता लग जाता है कि ये बैटरी ख़राब है। और ये ख़ास प्रिकॉशन इसलिए ली जाती है कि कहीं पर भी गलती से भी कोई ख़राब बैटरी किसी मोबाइल फ़ोन में ना चली जाए क्योंकि बैटरी अगर ख़राब जाती है या उसमें कोई मेल फंक्शन है तो वो एक पोटेंशियल रिस्क भी हो सकता है। फाइनली मोबाइल फोन की बैक मोबाइल फोन के ऊपर लगाई जाती है और इस पॉइंट पर आपका मोबाइल फोन कंप्लीटली रेडी हो चुका है। लेकिन अभी भी दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं और उनमें पहली चीज है आपके मोबाइल फोन की मेन सॉफ्टवेयर और दूसरी चीज़ है आपके मोबाइल फ़ोन की लोकलाइज सॉफ्टवेयर। अब मेन सॉफ्टवेयर जो होती है वो काफ़ी क्विक प्रोसेस होता है और बहुत जल्दी ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन के ऊपर कर दिया जाता है और इसके अंदर बेसिकली आपका एंड्रॉयड का वर्जन आ जाता है। लेकिन अक्सर औकात डिफरेंट मार्केट्स के लिए कुछ स्पेसिफिक सेटिंग्स होती हैं जो कि की जानी होती हैं। जैसे पाकिस्तान की अगर आप बात करेंगे तो उर्दू लैंग्वेज जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आती है और हो सकता है कि कोई ऐसी एप्लीकेशन जो सिर्फ पाकिस्तान में चलती हो उसको इंस्टॉल करना हो तो उसके बाद एक लोकलाइज सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है। इसके बाद मोबाइल फोन अपने अगले स्टेप की तरफ चले जाते हैं जहां पर फाइनल टेस्टिंग का जो फेज है वो स्टार्ट होता है और अब जो फाइनल टेस्टिंग है उसमें हर एक पॉइंट मशीन्स के थ्रू चेक होता है। सबसे पहले आपके मोबाइल फोन के अंदर एक सिम कार्ड डालकर उसकी सेलुलर कनेक्टिविटी को चेक किया जाता है और उसके बाद हर एक पोर्ट को बाकायदा तौर पर पावर देकर चेक किया जाता है जिसमें आपकी चार्जिंग पोर्ट होती है, आपका हेडफोन जैक होता है और अगर इस मोबाइल फोन के अंदर कोई और पोर्ट हो तो वो पोर्ट भी होती है। लेकिन सबसे बड़ी टेस्टिंग और ऑप्टिमाइजेशन जो है वो आपके कैमरास की आती है और ये चीज़ मेरे लिए भी एक सरप्राइज थी कि मोबाइल फोन्स जितने भी हम इस्तेमाल करते हैं हर एक यूनिट का कैमरा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो अगर आप दो realme 9i अपने हाथ में पकड़ेंगे और वो अभी तक कैलिब्रेट नहीं हुए हुए तो दोनों realme 9i सेम हार्डवेयर के साथ थोड़ा सा डिफरेंट परफॉर्म करते हैं और इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए हर एक मोबाइल फ़ोन को एक ऑप्टिमाइजेशन मशीन के अंदर लगाया जाता है जो कि डिफरेंट लाइट्स के अंदर डिफरेंट तस्वीरें खींचती है और उन मोबाइल फ़ोन्स की सेटिंग ऐसे करती है कि बेसिकली मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जो भी आपको लाइट्स हैं वो एक ही जैसी देखने को मिले ताकि अगर आप दो मोबाइल फ़ोन नए खरीदते हैं और उनको टेस्ट करते हैं तो दोनों के दरमियान में कोई भी फर्क ना हो। फाइनली मोबाइल फोन के अंदर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाया जाता है। अब मोबाइल फोन की असेंबली में फाइनल पार्ट जो है वो पैकेजिंग का होता है। नॉर्मली जितने भी असेंबली प्लांट्स में पैकेजिंग मैंने इससे पहले देखी थी उसमें पैकेजिंग मटेरियल बाहर से ही ज्यादातर बन के आता है
इसके केस में ज़्यादातर पैकेजिंग मटेरियल मैंने ये देखा है कि बॉक्सेस की फॉर्म में तो बाहर से बन के आ रहा था, लेकिन उसके ऊपर मौजूद जो स्टिकर्स थे वो रियल टाइम में प्रिंट हो रहे थे। तो आपके मोबाइल फ़ोन के बैक पे लगा हुआ जो स्टिकर होता है, जिसपे आपका IMEI नंबर होता है, वो बेसिकली उसी टाइम पे प्रिंट होता है और सारे स्टिकर्स जो हैं वो आपके पेपर वर्क के ऊपर लगा दिए जाते हैं और उसके बाद वेरीफाई करके कि सही मोबाइल फ़ोन सही बॉक्स में जा रहा हो, मोबाइल फ़ोन को बॉक्स के अंदर डाल दिया जाता है। अब यहाँ पर मोबाइल फ़ोन का जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन एक प्रोसेस जो कि इससे पहले होता है वो ये है कि जब भी कोई नया मोबाइल फ़ोन असेंबल होना स्टार्ट होता है तो उसकी पहली असेंबली के जो यूनिट्स हैं उनको टेस्ट किया जाता है, उनका ड्रॉप टेस्ट होता है और उनका स्क्रैच टेस्ट होता है और हमने वो भी करके देखा, जिसमें Realme 9i काफ़ी हद तक जो था वो बच गया। और एक बात ज़रूर है कि क्योंकि ड्रॉप टेस्ट मेरे कहने पे कर रहे थे तो वही यूनिट जो मैं बना रहा था उसी बेचारे को उनने गिरा दिया। अगला टेस्ट जो था वो बेसिकली एक माइनर अब्रेजन वाला स्क्रैच टेस्ट होता है, जिसके अंदर बेसिकली ये चेक किया जाता है कि आपके मोबाइल फ़ोन को ओवर द लॉन्ग रन जब अगर आप केस के बगैर यूज़ करते हैं तो उसके बैक पर कितने स्क्रैचेस आएंगे। तो वो टेस्ट भी जो था वो हमने परफॉर्म करके देखा। एंड ओवरऑल एक चीज़ जिसने मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड किया वो ये था कि किस तरह से बहुत ज़्यादा मशीनरी जो मैंने इससे पहले सिर्फ चाइना में देखी थी वो यहाँ पर यूज़ हो रही थी। इससे पहले जितने भी असेंबली प्लांट्स मैंने देखे हैं वो बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है, जिसकी वजह से क्वालिटी का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन Realme के केस में मुझे वो डिफरेंस देखने को नहीं मिला, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये एक डिफरेंट वीडियो थी जहाँ पर हमने आपको बैक एंड की चीज़ें दिखाई हैं, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है। Open the curtain. Get coffee machines ready. Play yoga song. Love me too. Because I love myself and everybody else, and you should love yourself like I love you too. Ooh, love me like I love myself, like I love everybody else, and you should love yourself like I love you too. Ooh, love me like I love myself. This is powerful. This is powerful. This is small, but powerful.
just like the Realme 99 Qualcomm Snapdragon 680 processor. This is fast. This is fast. This is fast. Just like the Realme 99 33 watts dart charge. This is long. This is long. This is long. Just like the Realme 99 5000 mAh massive battery life. Introducing the next level technology powering the Realme 99. Realme has always been at the forefront, using the most advanced processor possible to achieve blazing fast smartphone performance. The smaller a processor's process node, the more power can be packed into the same space, and the more energy efficient it is. That's why most flagship smartphones are powered by a 5nm or 7nm process. For the first time in this price category, the all-new Realme 99 is powered by flagship-grade 6nm Snapdragon 680 processor for next-level performance with outstanding energy efficiency. The 6nm process now packs up to 114 million transistors per square millimeter, greatly improving the computing efficiency. This is a 46% increase in overall performance compared to a 12nm process. You can also expect up to 62% lower power consumption while still delivering fast performance. And because the processor is so energy efficient, you can enjoy up to 46% longer battery life with a Realme 99 compared to the previous generation. Get ready to experience next-level gaming at optimized frame rates while consuming less power. The Realme 99 lets you blaze through tasks and do what you love in less time.